Hello, myself Biswajit. I have completed my masters from IIT Dhanbad. ଆମେ এই ଭିଡିଓରେ ଆମର LTR ପାଇଁ chapter wise NCERT Exemplar solve କରିବା. So first chapter ଚାଲନ୍ତୁ discussion କରିବା. So first chapter first question ଦେଇଛି angle between it actually I cap, this one is J cap. Similarly this one I cap, similarly this is J cap. A vector ଦେଇଛି I cap plus J cap, B vector ଦେଇଛି I cap minus J cap, then ଆମକୁ ପଚାରିଛି angle କେତେ ହବ. ନା ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି cos theta is equal to a dot b vector divided by a ର magnitude into b ର magnitude. So ଆଗେ ଆମେ a dot b ବାହାର କରିଦବା. a dot b vector ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ ନା I into I ସହିତ ଯାହା ବି ହଉଥିବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ବା ଇଏ ଗୁଡାକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ. So ଏଠି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର କେତେ ନା 1 into 1 plus 1 into minus 1. So answer is 1 plus minus 1 which is 0. So a dot b 0 ହେଇଗଲା. So ଦରକାର ନାହିଁ a ର magnitude ଆଉ b ର magnitude ବାହାର କରିବା. a ର magnitude ହେଲେ √2 ହବ. Similarly b ର magnitude ଯଦି ଚାହିଁବା ଏଇଭଳିଆ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ 1 ର square plus 1 ର square ର √2 ହବ. So which is √2. Similarly b ର magnitude ହବ b ର magnitude ହେଇଯିବ 1 ର square plus minus 1 ର square. So ଏଇଟାକୁ ଆମେ solve କଲେ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ କେତେ ନା 2 ର √2. So now I just put in this equation. So it become cos theta is equal to a dot b ର value କେତେ ହେଇଗଲା ନା 0 0 by ଯାହା ବି ରହିଲା ତଳେ ସେ ହେଇଗଲା √2. So similarly it is answer ହେଇଗଲା 0. cos ର କୋଉ value ଟା 0 ନା cos ର 90 ଟା ହେଲା 0. So theta I can write equal to 90 degree. So which is option B. Okay. So next question jiva. Next question is saying question number 2. Which of the following statement is true? So first ଦେଇଛି scalar quantity is one that is conservative in a process. So ଯଦି ଆମେ ଧରିବା kinetic energy କଥା, kinetic energy in inelastic collision ने ये कौन हबो ना constant न थाए, variable थाए. Okay, so इटा नेले कौन है जो ना ए इक्वेशन को भूल बोली प्रूव कर दो. Second कहला scalar quantity is the one that can never be take negative values. Temperature आप यहाँ में consider करिए temperature गोटे scalar quantity, but temperature can be negative. Temperature negative ही पारे because negative -4 -5 ये वाला रही है temperature. So इटा भी contradict कला, इटा भी wrong answer. So scalar quantity is one that does not vary from one point to another point in space. Then we can consider the gravitational force, sorry, gravitation potential energy. So gravitational potential energy, which is a constant, but it can vary from place to place. So ये भी भूले गला. ताले इटा गुड़ा बंचिला ना इटा. So इटा हला और correct answer. So scalar quantity has the same value observed with different orientation of the axis. Means किसी भी axis निया ता answer same ही रहेगा. So third one देला कहला कि figure रे देइची कि u and v दीटा vector देइची. u दे देला I ai cap plus b j cap. b vector दे देला. So this is u vector. Okay, and this is b vector going downwards. So from here we can write that u vector lies on first quadrant. Okay, and v vector lies on, so as it is going down, so I can write it lies on the fourth quadrant. So lies on fourth quadrant. Fourth quadrant रे गले कौन है जो ना इटर यूरो जेहेतु फर्स्ट क्वाड्रेंट रे लाइज करिछि. सो ए बी दीटांको क्वांटिटी कौन है जो ना पॉजिटिव क्वांटिटी बा ग्रेटर देन 0. बट as it is lies in the fourth quantity or fourth quadrant, so v रो फर्स्ट पार्ट जोटा कि x एक्सिस रे रहइबो सेटा पॉजिटिव, दैट इज फॉर b वेक्टर पई कौन है जो ना p टा है जो पॉजिटिव, बट q टा कौन है जो ना नेगेटिव. q इज नेगेटिव. सो कोडी अछि हमर कोडा कोडा पॉजिटिव हैला a b p पॉजिटिव, a b p पॉजिटिव, q इज नेगेटिव. सो इट इज ऑप्शन नंबर b. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. सो एटा कहला
the component of vector r along x axis will have maximum value if. So just consider करिवा गोटे वेक्टर नहीं गले इटा गोटे कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रे गोटे वेक्टर नहीं गले लेट r वेक्टर. सो ए r वेक्टर ता केतेबेले तार x एक्सिस रे तार वैल्यू केते हे जिवो ना जदि हमें कंसीडर करिवा r इक्वल टू rx सेटा केते हे जिवो ना इट जो एंगल थिवो थीटा हिसाब रे इटा हे जिवो कोन ना r cos थीटा. सो एटा केतेबेले मैक्सिमम हबो जदि cos थीटा रे वैल्यू केते हे जिवो cos थीटा रे वैल्यू +1 हे जिवो. सो cos थीटा +1 मींस थीटा केते हे जिवो ना एंगल 0 डिग्री. Okay, that means if this is lies along this x-axis, this r vector lies along this x-axis, then we can say that r is maximum. So we take the option number B. So next question. So next question जो है, next question कहला, कहला horizontal range projectile fired at an angle. Okay, so इटर कौन करिबा ना प्रथम बाहर करिबा ए रेंज दे देइची एंगल दे देइची. सो रेंज रो फार्मूला कोन ना रेंज रो फार्मूला हला r इज इक्वल टू सो फार्मूला हे गेला v स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. ओके, देन हम कौन करिबा ना वैल्यू दे देइची पुट कर दबा एटा हे गेला 50 इज इक्वल टू v स्क्वायर sin 2 थीटा. 2 थीटा मींस 2 into 15 बाय जहाँ भी जहाँ थिला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी. सो एबे कौन हे जिवो ना v स्क्वायर हे गेला केते ना 50 into g डिवाइडेड बाय ये sin 2 into 15 केते हे गेला ना sin 30 sin 30. सो sin 30 रा वैल्यू केते ना 1/2. सो ये हे गेला 50 into g बाय 1/2 1 into 2 टा ऊपर मल्टीप्लाई हे गेला. सो आमे लिखि परिबा 100 g. ओके, मींस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जोटा रहला g टर्म में लिखि देले कोटा v स्क्वायर टा. v स्क्वायर कौन ना वेलोसिटी रो स्क्वायर. सो अगेन कौन कहि ना सेटा को हमें बाहर करिवा जेतले कि एंगल अछि 45 डिग्री. सो एंगल 45 डिग्री हले सही फार्मूला पुट कर दबा r इज इक्वल टू v स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. ओके, नाउ v स्क्वायर जगह हम 100 g पुट कर दे परिबा 100 g into sin थीटा sin 45 into 2 हे गेला डायरेक्टली लिखि दबा हमें sin 90 डिग्री बाय g g g कैंसिल हे गेला sin 90 रे वैल्यू हे गेला 1. सो हमें आंसर लिखि दे परिबा डायरेक्टली 100. सो 100 कोड अछि ना ऑप्शन सी. क्लियर. ओके, दिवा नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कंसीडर ए क्वांटिटी प्रेशर पावर एनर्जी इंपल्स and gravitational potential electric charge temperature area out of these which only a vector quantities. So option नु जीवा इठी कौन है impulse. impulse टा हला कौन ना जो rate of change of momentum sudden change हबो जोटा that means momentum रो direction अछि means impulse रो direction अछि. So इटा गोटे vector quantity हबो. But pressure is not a vector quantity, so it is a scalar quantity. So इटा भूले गला गला. Second कहला कौन ना impulse and area. Impulse भी vector quantity and area sometimes act as vector quantity. जेतोला हम इलेक्ट्रिक फील्ड करे काम करंती. सो गॉसियन सरफेस नेला बेले कोनोसी को सरफेस नहीं गेले जो सरफेस रो हमको बाहर करिवार अछि दे जी वेक्टर एटा कहबो ना सरफेस को परपेंडिकुलर हे कि जो वेक्टर ये गुडा रहिला बा परपेंडिकुलर डायरेक्शन बा एटा टॉप एमते ओभर रहि जिवो सेटा कोन हे जिवो ना दैट एरिया वेक्टर डायरेक्शन. सो हम एटा एमिति लिखि परिबा कि यार ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन बी जोडा कि इंपल्स इनटू एरिया. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ये हबनी ये जो स्केलर क्वांटिटी. सो से वाला प्रेशर हम एबे कहली एटा भी स्केलर क्वांटिटी. सो गोटे ही लाइज करूची जोटा कि ऑप्शन बी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना नेक्स्ट क्वेश्चन कहला टू डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट. देन हमको बाहर करियो पॉजिटिव कांस्टेंट v नॉट टा गोटे पॉजिटिव कांस्टेंट हेले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू. सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देइछि द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम. सो एठी कोन देइछि ना स्पीड कांस्टेंट v नॉट जोटा कि हमर कोन ना स्पीड कांस्टेंट हेले हमें कहि परिबानी कि वेलोसिटी टा भी पॉजिटिवली थिबो
कि नेगेटिवली थिबो कि जीरो थिबो तेणु एटा परे किछि कहि हेबो नै तेणु ये मे भी जीरो ही पारे सो ये ही गला बोल सेकंड आसी गला कोन एवरेज एक्सीलरेशन मस्ट ऑलवेज वेनिश एवरेज एक्सीलरेशन नेले जेहेतु आमे बाहर करूछंती ना बॉडी टी मूव करूची सो जदि वेलोसिटी जीरो न हुए जदि वेलोसिटी जीरो न हुए ताले एक्सीलरेशन जीरो हबो नाही सो एटा भी सबो केस रे जीरो हेबो नाही तेणु एटा भी लिखि परिबा नै डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम इंटरवल आर इक्वल सो एटी कि सेमिति कि दिया हैनी आ पर किछि कि यूनिफॉर्म मोशन कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन तेणु एटा हमें कहि परिबा नै ठीक बोली सो एटा कोन कहले इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल सो एटा है जो आंसर सो करेक्ट आंसर सो ऑप्शन डी हम एटा लिखि परिबा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा so next question कहला same question देइछि b not is a positive constant then which of the following are constants so necessarily true then आमे जिबा फर्स्ट पचाला acceleration of a particle is zero आमे एटा कहि परिबा नै जे acceleration of the particle ता zero हो बोली एटा भी भूल acceleration particle is bounded ना ये भी नै acceleration of the particle is necessarily in the plane of motion right plane of motion जो थ्री दिवो सही plane ने acceleration ता लाइज करियो सो एटा ऑप्शन नंबर 3 सर्कुलर मोशन कथा भी कहि परिबा नाही ओके देन एटा हला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन आसीबा पचारिला a plus b plus c is added up to 0 then which of the false which find which is false यदि a plus b c तीनटा को मिसी गेले 0 होउची देन कोउटा रॉन्ग होची त लिखिबा a plus b plus c is equal to 0 देन हम कोन करिबा ना बोथ साइड रे गोटे b वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट रे नै जिबा b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट नै गेले सो ये भी एक भी नहीं जीवा लेफ्ट साइड क्रॉस बी सो ये ही वाला कौन ना लेट लिख दे परिबा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सो सेही रूल टा को यूज करिवा सो बी क्रॉस 0 हो गेले ये गला बी क्रॉस 0 दैट मींस इक्वल टू 0 सो आमे लिखि परिबा सेम वेक्टर रहिला एंगल हे जो 0 डिग्री सो ए वैल्यू टा हे जो सेम वेक्टर रो क्रॉस प्रोडक्ट हे गेले 0 हे जो सो आमे सेटा लिखि परिबा नै एटा 0 हे गेले एटा खाली रहिला b क्रॉस a इक्वल टू b क्रॉस सॉरी प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0 सो मैं एटा लिखि परिमी b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस c और ताको सीधा करिया पे हम लिखि दे परिबा a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c काहेकि ना क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव सो प्रॉपर्टीज नंबर 1 सो एटा मु पाइला पर फर्स्ट ऑप्शन देछि कोन a क्रॉस b क्रॉस c इज नॉट 0 अनलेस b एंड c आर पैरेलल सो चेक कर दवा एटा कोन होछि ट्रू कि फॉल्स सो फर्स्ट कोन करली मु बोथ साइड रे c क्रॉस नै जिबा a क्रॉस b ऑलरेडी अछि बोथ साइड रे c क्रॉस नै जिया फर्स्ट ऑप्शन चेक करिया पे सो b क्रॉस c ओके सो इटा ई केस रे हम क्लियरली देखि परिबा इटा सेतिका बेले 0 हबो जदी b आउ c पैरेलल वेक्टर होंदी पैरेलल वेक्टर हेले जाई आंक भीतर केते हबो ना एंगल ए जो 0 डिग्री हेले ए पर्टिकुलर वैल्यू टा 0 होई जिवो पर्टिकुलर वैल्यू टा 0 हेले ही जाई हमें कहि परिया अदरवाइज 0 होई परिबो नाही सो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि जदी b आउ c पैरेलल हुअंती देन कह हबो ना a क्रॉस b the left side part cross c equal to 0 otherwise not so option a is correct then हमें चेक करिवा ऑप्शन b कह कहला ना a cross b cross c parallel is not 0 unless b and c डॉट प्रोडक्ट दे दीजिए ओके हमें सेटार बाहर कर दवा एटा हम नै आइथा इक्वेशन 1 डॉट प्रोडक्ट बाहर कर दवा ओके a क्रॉस b ऑलरेडी अछि खाली डॉट प्रोडक्ट नहीं गले c इज इक्वल टू ये हे गला b क्रॉस c डॉट c लुक जदि हम ए जो b क्रॉस c नबा किछि भी एंगल रहिला ये हे गला b c sin थीटा इनटू n कैप इनटू c वेक्टर सो देखो ए जो n कैप टा कोन हबो ना n कैप टा हे जिवो जो वेक्टर ओके वेक्टर a unit vector that is perpendicular to the plane containing b and c that means n cap it हम indicate करिवा n cap is perpendicular to b
and also to C. So that means A and C ভিতরে angle কেতে ହେଇଯିବ 90 ହେଇଯିବ. So 90 ହେଇଗଲେ A value টা automatically কাରଣ cos 90 ହେଇଗଲେ 0 cos 90 ହେଇଯିବ cos 90 ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲା 0. So A value ଟା automatically 0 ହେଇଗଲା. That means କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ BC ଟା parallel ହବା, ସେ automatically 0 ହେଇଯିବ. So ଏ option ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା. Third ଆମେ check କରିବା ABC define a plane where A cross B cross C in that plane, right? चेक करदवा ऑप्शन सी टा को चेक करदवा जोटा कि लेट ए क्रॉस बी हे गला सिमिलर वे रे हमें जीवा ए जो ऑप्शन टा को ए जो ये टा को धरिथिले ए जो इक्वेशन टा को नै जीवा इक्वेशन 2. ओके, सो लेफ्ट साइड रे अछि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी. ओके, सो एबे हम चेक करियो ओके लेफ्ट ए क्रॉस बी कोन हे जीवो ना से कहिछि ए बी सी तीनटा अंक गोटिए प्लेन ने डिफाइन होउतंती. ओके, तन ए फर्स्ट जे हम ए क्रॉस बी बाहर करिवा तल ए क्रॉस बी रे जो एन कैप टा आसी जीवो इनटू सी वेक्टर ए भला रहिला. तो एन कैप रे जो वेक्टर टा आसी जीवो एटा कोन हबो ना एन कैप टा हे गेला कोन ना परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड आल्सो बी वेक्टर. देन आंको भीतर एंगल केते हिजो कारण सी भी लाइज करूची ए और बी जो प्लेन न अछंती. दैट मींस एन और सी भीतर जो एंगल रहिला एन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू सी. दैट मींस एंगल 90 हे गला. सो एंगल 90 हे गले ये पुणी कोन हे जीवो ना जो अगेन जोटा आसी जीवो आंको भीतर बाहर कले एन सी इनटू sin थीटा जो n1 लेट n1 क्या हो ये कोन हे जीवो ना ये अगेन आसी जीवो सेही प्लेन को बुझी गेलो कारण फिर ये कौन करियो ना परपेंडिकुलर सी और एन को फिर परपेंडिकुलर हेले ऑटोमेटिकली से कौन हिजो ना आसी जो सेही प्लेन ने लाइज करियो. सो एटा कौन हिजो ना लाइज ऑन द सेम प्लेन. सो ये मध्ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन मध्ये करेक्ट अछि. ओके, देन जीवा थर्ड वन. सो सॉरी फोर्थ वन कहला कौन ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज सॉरी डॉट सी इज इक्वल टू एबीसी हबो जदि हुए देन एटा हमें कहबा कि एटा हबो बोली. ओके ओके ठीक है, देन हम प्रूफ करिवा. सो ऑप्शन डी टा को चेक कर दवा. ऑप्शन डी रे रहिला कोन हमें नै गले ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू हमर एक प्रूफ करिवार अछि कि एबीसी हबो. ओके, सिमिलरली त लारे हम कोन करिवा ना एबीसी sin थीटा जहां भी आसिला इन डॉट एन कैप गोटा आसीबो डॉट सी वेक्टर आसिला. ओके, ये एबीसी sin थीटा गोटे कांस्टेंट वैल्यू हटै दियो तक तो. ओके, लेट ए जगह रे कोन करबा ना लेट थीटा इक्वल टू 90 बोली कंसीडर करबा का भीतर ना ए और बी भीतर 90 अछि ताले ए परपेंडिकुलर टू बी बोली कंसीडर करबा. ताले ये कोन हे जीवो ना ए बी एन कैप इनटू डॉट सी. सो एटा केते बळे एबीसी हबो कारण मोर एलएचएस मते आरएचएस रे करिवार अछि एबीसी हबो बोली कहिजी. एटा एबीसी केते बळे हबो जदि आंको भीतर एंगल केते हेतिवो ना 0 डिग्री हेतिवो. सो दैट मींस मु कहि परिबी एन कैप टा पैरेलल वेक्टर और पैरेलल टू सी वेक्टर कहि परिबी ना. ओके, दैट मींस ये थीटा टा केते हे जिवो एक जगह रे ना 0 हे जिवो बा ए जगह रे थीटा हे गेला 0. सो एटा मु कहि परिबी कि ये हे गेला ए बी सी. सो एटा कोन कि जदि मु एबे कोन करिबी ना एटा सतिकाला पॉसिबल हो जेतबेले टिके ये करियो. सो एटा सतिकाला पॉसिबल हो जेतबेले कि ये तीनटा अंक ए बी सी तीनटा गोटे ट्रायंगल तीनटा साइड हबो आ हमें कहि परिया ये ओबे करिवो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सो एटा मु ए भलिया लिखि परिबी लेट ए भलिया रहिवो ये हे गला ए वेक्टर ये हे गला बी वेक्टर then this one will be c vector. So in this case I can say that c square is equal to a square plus b square. So ये मध्ये ऑप्शन डी मध्ये ठीक हैला. ताले भूल कोउटा रहिला ना एटा गोटे हमें प्रूव करथिले जोटा कि ऑप्शन बी बोली जोटा करेक्ट बा इनकरेक्ट. ओके सैला देन जीवा ऑप्शन बी इनकरेक्ट. ओके, देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन कहला it is found that by mistakenly zero टा written हे जाइछि एटा भूल लिखा जाइछि. so just ignore it. so एटी कहिछि it is found that a plus b is equal to a हेले एटा कोन implies करूछि. so आमे लिखि दै परिबा
सो ता हिसाब रे हम प्रोसीड करिबा लेट a plus b इज इक्वल टू a देन कोन करिबा ना बोथ साइड रो स्क्वायर नै जो स्क्वायर नै गेले एटा को मु लिखि परिमी a plus b डॉट a plus b सिमिलरली ये a डॉट a सो ये हे जो a डॉट a हे जो एंगल हे जो केते ना a डॉट a एंगल हे जो 0 डिग्री सो cos 0 1 सो छाड़ दियो ता कथा देन आसी गला प्लस a b cos थीटा सो अगेन हे जो एटा b a cos थीटा काना एंगल तांग भीतर लेट थीटा देन b डॉट b हे गला कोन ना b स्क्वायर काना b b भीतर एंगल 0 हे जो ये हे गला a स्क्वायर सो आई कैन राइट दिस इज आल्सो a स्क्वायर लेफ्ट साइड a स्क्वायर राइट साइड a स्क्वायर कैंसिल आउट हे गला सो बंचिला कौन ना बंचिला ये बंची गला कौन टे ना 2ab सो आई कैन राइट 2ab cos थीटा is equal to sorry plus b square is equal to 0 so take b as common so b common नहीं गले ये ही गला कौन ना 2a cos theta plus b equal to 0 that means मु कहि पारि मे एठु इंडिकेट हे जो b is equal to 0 or 2a cos theta plus b is equal to 0 so गोटे ऑप्शन हम पाई गेले b टा 0 सेटा ठीक अछि नेसेसरी इंप्लाइज या करूची देन हमें करि परिबा एटू cos थीटा इज इक्वल टू हमें लिखि परिया माइनस b बाय 2a cos थीटा रो वैल्यू देखो नेगेटिव रे आसुची सो नेगेटिव रे आसुची माने एटा इंडिकेट कोन करूची ना a b आर एंटी पैरेलल काना डॉट प्रोडक्ट टा cos थीटा टा नेगेटिव माने ता डॉट प्रोडक्ट टा नेगेटिव हे जो सो एटा हम इंडिकेट करूची ए बी कोन हे जो ना एंटी पैरेलल हो जे एंटी पैरेलल ला परपेंडिकुलर हबो नै तले एटा भूल हे गला आउ कोन इंडिकेट करूची ए डॉट बी नेगेटिव रो राइट कारण cos थीटा रो वैल्यू जदी नेगेटिव रे आसुची सो जेतबेला हमें a डॉट b बाहर करिवा सो मु लिखि दे परिमी एटार वैल्यू केते हे जो ना ab cos थीटा सो cos थीटा जगह रे हमें ता वैल्यू जति बाहर करले पुट कर द सो ab होल इनटू माइनस b बाय 2a सो a कटि गला हमें लिख दी परिया माइनस b स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज नेगेटिव वैल्यू कारण देयर इज अ माइनस साइन सो हमें एटा भी लिखि परिबा a डॉट b इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 सो आर तीनटा आंसर हबो a भी करेक्ट आंसर b भी करेक्ट आंसर एंड d भी करेक्ट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ई चैप्टर रो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला two particles are projected in air with speed v naught at an angle theta 1 and theta 2 दीटा पार्टिकल गोटे कांस्टेंट स्पीड रे थ्रो करा होईची सेमानकर स्पीड कांस्टेंट अछि देन टू बट एंगल डिफरेंट अछि देन पचारिची एमानक भितर कोगुडा करेक्ट हो ओके चलो देखिए फर्स्ट and also it is given that if height reached by the first particle is greater than that of second that means it is indicate that h1 is greater than h2 okay क्लियर अछि एठु हमें कोन करिवा ना गोटिए गोटिए बाहर करिवा आ चेक करिवा कोगुडा को ठीक हबो कोगुडा को भूल हबो ओके सो यदि h1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू h2 हुए सो हमें एटा लिखि परिवा कि सो एठु इंडिकेट कोन करूची ना एठु इंडिकेट करूची कोन हबो ना sin थीटा 1 टा इज ग्रेटर देन sin थीटा 2 because h1 रो वैल्यू दे हम पुट करिवा एटा केवल v नॉट रो v नॉट टा 0 सॉरी कांस्टेंट अछि लिखि दै छी v नॉट इज कांस्टेंट बोथ द पार्टिकल पई सेम अछि त एटा कांस्टेंट g भी कांस्टेंट कटि जिवो त sin स्क्वायर थीटा 2 सो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हे गेले एटा हे जो sin थीटा 1 इज ग्रेटर देन sin थीटा 2 सो एटा इंडिकेट कला कोन ना थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 हम लिखि परिवा सो व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज आल्सो करेक्ट देन करि परिवा कोन ना पचारिची एटा थीटा 1 थीटा 2 बोले लिखा जायछि थीटा 1 थीटा 2 देन पचारिची टाइम ऑफ फ्लाइट रो फार्मूला कोन ना t रो फार्मूला हे गेला 2v sin थीटा बाय g सो एठु हम इंडिकेट करि परिवा जदि v कांस्टेंट रहिला g कांस्टेंट रहिला 2 भी कांस्टेंट सो sin थीटा ऊपर डिपेंड कला सो sin थीटा 1 इज ग्रेटर देन sin थीटा 2 so it indicates that t1 greater than t2 so option 2 is also correct then it indicate kala kon na range upar ye indicate kala range ro formula kon na range ro formula hala v square sin range ro formula is equal to v square sin 2 theta by g so hame eta likhi pariba
देखो b स्क्वायर कांस्टेंट g कांस्टेंट सो जदि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 थीटा 1 आमे लिखि परिया 2 थीटा 2 ग्रेटर हबो तो सिमिलरली sin 2 थीटा 1 is greater than sin 2 theta 2. So which indicates that range 1 is greater than range 2. So it is also correct. And the last ra check kar do. So last ra check kale kon hobo na eta pacharichi total energy ta greater hobo ki. So total energy kon hobo na jetobale particle ti move karuchi. So air re rahuchi. So different particle. So at the time of projectile motion ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମୋସନ ଯେତେବେଳେ ନବା ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡିଟା ମୁଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏଇ ଜାଗାରୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଭେଲୋସିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସୋ ଆଙ୍ଗେଲ ସିନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଲା ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲିଖିପାରିବା ନା କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି so as we know so total energy is always constant okay because if v is constant so in the starting body कौन होइछि ना ग्राउंड रे अछि सो पोटेंशियल एनर्जी कौन होइजिवो ना जीरो होइजिवो सो काइनेटिक एनर्जी कौन होइगला ना टोटल एनर्जी होइगला काइनेटिक एनर्जी सहित समान जोटा कि हाफ एम v स्क्वायर सो एटी v नॉट देछि v नॉट रो स्क्वायर लिखिबा तो सिमिलरली लेट फर्स्ट बॉडी रे m1 नै जिबा दिस इज m1 सो सेकंड बॉडी रे सेंती टोटल एनर्जी केते हबो सेकंड बॉडी रे फर्स्ट बॉडी रे तो सिमिलरली एटा हे जो 2m2 v नॉट स्क्वायर सो ये कौन करूची ना केवल m ऊपर डिपेंड करूची सो एम एटी गिवन नाही सो ए विषय आमे कहि परिबा नाही टोटल एनर्जी टा किए बड़ हबो किए सान हबो तेणु आम कतिरे कहि गेला ना तीनटा करेक्ट आंसर आसिला एटा रॉन्ग आंसर हि गेला सो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देन पचारिला ए पार्टिकल स्लाइड्स देन पद देछि फ्रिक्शनल लेस parabolic y equal to x square so it is printing mistake it is our x square okay track a b c then pacharichi starting from point A to B and point B is at vertex C is heightless then at that of point A after C the particle moves freely in the air projectile if the particle reaches at point P then हमको ये सब जिनिस पचारिछे काइनेटिक एनर्जी केते लोक बॉडी ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଯାଇଛି ଏଠୁ କଣ କରିଛି ନା ଏଇଠି ଭେଲୋସିଟି ଟା ଜିରୋ ହେଇଛି ବୋଲି ଫେର ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭ କରିଛି ଅଦରୱାଇଜ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ନ ହେଇଥିଲେ ଏଠି କଣ କରିଥାନ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ବଡି ଫେର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଟପ୍ କୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ସୋ ଭେଲୋସିଟି ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଜିରୋ ହେଇଛି ବୋଲି ବଡିଟା କଣ କରୁଛି ନା ରିଟର୍ନ କରୁଛି ସୋ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସୋ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଆଟ୍ ପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି at p equal to 0 so kinetic energy ଯଦି p ରେ 0 ହେଲା obviously ଏଟା b ସହିତ ସମାନ ହେଇ ପାରିବନି କାରଣ b ରେ kinetic energy କେବେ 0 ନ ଥାଏ ଇଏ ଆସିଲେ କିଛି ଏନର୍ଜି ଇଏ କିଛି ଭେଲୋସିଟି ରେ ଆସିଥିବ ଫେର ରିବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯିବ ସो ଏଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଭେଲୋସିଟି 0 ନ ଥାଏ ସो obviously ଆମେ କହିବା କି kinetic energy at b is greater than kinetic energy of p ସो ଏ ଯୋଉ ଅପସନ ଟା ଦେଇଛି ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ପଚାରିଛି height at p is equal to height at a height ସେମ୍ ହବ କି ଯେତେବେଳେ ବଡିଟା ମୋସନ ଆସିଛି ତଳେ ବାଡେଇ ହେଉଛି ସୋ କିଛି ନା କିଛି ଏନର୍ଜି ସେ କଣ କରିବ ନା ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ କଲିଜନ ଥ୍ରୁ ଯୋଗୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଲୁଜ କରିଯିବ କିଛି ନା କିଛି ଏନର୍ଜି ଲୁଜ କରିଯିବ ସୋ ଲୁଜ କରିଗଲେ ଇଏ ଯେତିକି ହାଇଟ୍ ଥିବ obviously h ର ହାଇଟ୍ ଏଟା h ଅଛି ସୋ h ର ହାଇଟ୍ ସେତେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସୋ h ର ହାଇଟ୍ p ର ହାଇଟ୍ ସେତେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସୋ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା a ର ହାଇଟ୍ h a ଟା ଗ୍ରେଟର ହବ ଦାନ hp ସୋ ଏଟା ବି ଭୁଲ ହବ then कहला total energy at p is equal to total energy at a okay so as we know the total energy is constant in a motion କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ତଳକୁ ଖସି ଖସିକା ଯାଉଛି ବଡି ଯେହେତୁ ଏଠି ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ ବା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲନେସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି ତେଣୁ କଣ କରିବ ନା ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଦିଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ଗୋଟେ ହେଲା କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି ସୋ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଯେତେ କମି କମି ଯିବ ଇଏ କଣ କରିବ ନା କନଭର୍ଟ ହେଇକା ଯିବ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି ରେ ସୋ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି at any stage in this motion we can say that is constant so ଏଇଟା कौन हबो ना करेक्ट हबो देन कहले टाइम ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम ट्रैवल फ्रॉम बी टू पी सो एटा भी हबो नै काना ट्रैक ता सिमेट्रिक पाथ नाही जेहेतु एटा सिमेट्रिक पाथ नाही गिवन नाही सो आमे कहि परिबानी ये टाइम जेतिके अछि ये टाइम ता सेतिक हबो बोली सो एटा आमे कहि परिबा एटा डिफरेंट हबो टी ए टू बी इज नॉट इक्वल टू टी पी टू पी सो एटी गोटे ऑप्शन एटा भी भूल गेला सो गोटे ऑप्शन ठीक जोटा कि ऑप्शन नंबर सी ओके देन